Okay, last class we discussed about Bohr's atomic model, hydrogen, line spectrum, etc. Today we are going to discuss the limitations of Bohr's atomic model. First one, limitations of Bohr's atomic model. Bohr's model of the hydrogen atom was no doubt an improvement over Rutherford's nuclear atomic model. तो Rutherford's nuclear atomic model से कंपेयर करेंगे तो बोर्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बेटर। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में मैक्सिमम लिमिटेशन है, वो मैक्सिमम लिमिटेशन को बोर्स एटॉमिक मॉडल ओवरकम किया, बट सम little bit limitations are there. The first limitation is uh, it fails to account for the finer details doublet, that is too closely spread lines of the hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic techniques. Clear? Okay, right. तो यहाँ पे फर्स्ट मेनली डबलेट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. डबलेट मीन्स व्हाट? डबलेट तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर्म होने के बाद एक्चुअली क्या होता है, स्पेक्ट्रम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रीड करने के बाद उसको जर्नल से कंपैरिजन करके डिफरेंट डिफरेंट आइटम को आइडेंटिफाई करते हैं. तो डबलेट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे ग्राफ में क्लियर. ग्राफ में ये जो लाइंस, टू लाइंस आर फॉर्म्ड नियरली इन द स्पेक्ट्रल सीरीज. यहाँ पे देखो, that is too closely spread spaced lines. टू क्लोजली स्पेस लाइंस एक्चुअली यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे ग्राफ रहेगा. तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ. तो टू closely spaced lines, these two lines, these are known as doublet. यहाँ पे टू है तो डबलेट, थ्री होगा तो ट्रिपलेट, फोर होगा तो क्वाड्रपलेट एक्सेट्रा. तो नेम किया जाता है. तो ये डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रपलेट एक्चुअली हाइड्रोजन में डबलेट फॉर्म होता है. ये डबलेट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं. कौन सा? बोर साइंटिस्ट ने बोर एटॉमिक मॉडल में एक वन ऑफ द मेजर डिफेक्ट. तो ग्राफ में तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रपलेट एक्सेट्रा लाइंस फॉर्म होते रहेगा. तो लाइंस के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ये क्यों फॉर्म हो रहा है फर्स्ट. एंड नेक्स्ट वन, दिस model is applicable to only one electron containing atoms like hydrogen. ठीक है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम के लिए एप्लीकेबल होता है. तो 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स होने वाला एटम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता. एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, बेरिलियम प्लस 3, लिथियम प्लस 2 मीन्स वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम्स को ये मॉडल एप्लीकेबल हो सकता है. And next one, this principle does not explain the Zeeman effect and Stark effect. These two are very important. Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect and Stark effect. Stark effect. तो ये दोनों के बारे में भी क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. Which model? Bohr's atomic model. Equations of Bohr's atomic model or Bohr's model. यहाँ पे Zeeman effect, Stark effect क्या होता है? When we apply the electric field or magnetic field to the spectral lines. तो ऑलरेडी आपको पता है स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होगा
तो ये स्पेक्ट्रल लाइन्स किस पे फॉर्म होगा, इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉर्म होगा। ये फोटोग्राफिक प्लेट पे स्पेक्ट्रल लाइन्स फॉर्म होगा, स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन्स को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगी तो फर्दर दिस लाइन्स विल बी स्प्लिटेड। तो स्पेक्ट्रल लाइन्स को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से लाइन्स विल बी स्प्लिट, दैट इफेक्ट इज नोन एज जीमन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद स्पेक्ट्रल लाइन्स फर्दर स्प्लिट होते हैं। दिस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमन इफेक्ट। This will not explained by the Bohr scientist. And next one is Stark effect. Same. When we apply the electric field to the spectral lines, then this spectral lines further splitted. Then that effect is known as Stark effect. Stark effect कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी तो स्टार्क इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन्स को अप्लाई करने से this spectral lines will split into further lines. So ये spectral lines दोनों में से कोई भी एक फील्ड अप्लाई करेगी तो लाइंस फर्दर स्प्लिट होता है। ये लाइंस फर्दर क्यों स्प्लिट होता है उसके बारे में बोर साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद लाइन स्प्लिट होगा तो दैट इज नोन एज जीमन इफेक्ट। एंड द स्पेक्ट्रल लाइंस बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इफेक्ट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन को अप्लाई करने के बाद फर्दर लाइंस क्यों स्प्लिट होता है उसके बारे में बहुत साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया। एंड अनदर वन इज मेजर defect or limitation of Bohr's atomic model is it could not explain the ability to form molecules by chemical bonds. Finally, it does not explain the chemical bonds between atoms. तो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड किससे फॉर्म होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो these are the major limitations of Bohr's atomic model. Simple, it does not explain the more than one electron containing atom spectral lines, and it does not explain about the doublet, and it does not explain the Zeeman effect and Stark effect, and it does not explain about the chemical bond formed between atoms. These are the limitations of Bohr's atomic model. Now we are going to discuss next topic. The topic is towards quantum mechanical models of the atom. So here, based on the, तो ये भी बोर साइंटिस्ट जो एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया उसमें भी डिफेक्ट्स हैं। तो वो डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए हैं। उसमें टू मॉडल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट वन इज हियर, okay, first one is dual behavior of matter and second one is Heisenberg uncertainty principle, also one of the very important models. First one, ये दोनों किस पे डिपेंड हुआ, बोर्स एटॉमिक मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल को प्रूव करने के लिए मेथड से। तो फर्स्ट वन, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। Dual behavior of matter, and second one is Heisenberg uncertainty principle. So now we are going to discuss dual behavior of matter. तो ऑलरेडी मैंने एक बार स्टार्टिंग में डिस्कशन किया ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट का ड्यूअलिटी को डिस्कशन किया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने दो, लाइट होने दो, टू प्रॉपर्टीज होते हैं। वन इज वेव लाइक प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। वेव प्रॉपर्टी एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से ऑब्जर्व, दिस इज मैटर,
मैटर, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर को भी दो प्रॉपर्टी होता है, वन इज वेव प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज पार्टिकल प्रॉपर्टी। तो द रिलेशन बिटवीन, तो यहाँ पे ड्यूअल बिहेवियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा तो फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, इस सबको लेके वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो हियर द फ्रेंच साइंटिस्ट डी ब्रोगली in 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior, both particle and wave-like properties. This means that just and wave this means just as the photon has momentum as well as wavelength, electron should also have momentum as well as wavelength. तो सिंपल मैटर को भी दो प्रॉपर्टी होता है, एक वेवलेंथ प्रॉपर्टी रहेगा एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टी रहेगा। तो ये डी ब्रोगली साइंटिस्ट कब एक्सप्लेन किया, 1924 में एक्सप्लेन किया। जैसे फोटॉन को मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, तो मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, तो ये टू प्रॉपर्टीज किसको रहेगा, फोटॉन को रहेगा। फोटॉन इज लाइट एनर्जी, तो फोटॉन को मोमेंटम रहेगा एज वेल एज वेवलेंथ रहेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन आल्सो हैविंग मोमेंटम एंड वेवलेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आल्सो वन ऑफ द मूविंग पार्टिकल, तो मूविंग पार्टिकल होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी फोटॉन की जैसे मोमेंटम रहेगा, वेवलेंथ। हियर मोमेंटम इज इंडिकेटेड विथ लेटर p, wavelength is indicated with lambda। सेम यहाँ पे भी मोमेंटम को p लेने का एंड वेवलेंथ को लैम्डा लेने का। तो हियर डी ब्रोगली साइंटिस्ट गिव द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन एक्सप्लेन किया डी ब्रोगली साइंटिस्ट का। ये साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, scientist give a relation between momentum and wavelength. That relation is lambda is equals to h upon p, Here lambda is equals to wavelength, p is equals to momentum and h is equals to Planck constant। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मैटर में ही रहेगा, तो इसलिए उसका भी सेम फोटॉन की जैसे इलेक्ट्रॉन बिहेवियर रहेगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h upon p, h Planck constant, p momentum। Here p is equals to m into v, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी किसका कंसीडर करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई लैम्डा इज इक्वल्स टू h upon mv is the relation of momentum and wavelength। Okay, next, and by this equation here this principle is used to discover the electron microscope। तो ये दो भी साइंटिस्ट जो रिलेशन बताया वो रिलेशन पे डिपेंड होकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेंस मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कंपेयर, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसका कोई भी सब्सटेंस होने से वो पार्टिकल का साइज कितना टाइम इंक्रीज होगा, 15 बिलियन टाइम्स, 15 मिलियन टाइम्स ग्रेटर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतना साइज दिखेगा, वही सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो 15 मिलियन टाइम्स, वो सब्सटेंस जितना है उससे 15 मिलियन टाइम्स ज्यादा करके दिखाई देगा। तो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप will be discovered। This is the real behavior of matter।
and here some examples are given. The first one, second one, simple based on this numerical only. Here momentum is equals to mass into velocity. ये एक आपको याद रखना पड़ेगा. And next one is second principle, Heisenberg's uncertainty principle. तो ये principles important है for numericals. Second one, Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg uncertainty. Uncertainty principle. Second topic. So Heisenberg uncertainty principle also very easy. So according to Heisenberg uncertainty principle, um, Werner Heisenberg, a German scientist in 1927, stated uncertainty principle, which is the consequence of dual behavior of matter. So based on dual behavior of matter, 1927, he gave me uncertainty principle. It explains, it states that it is impossible to detect simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. Exact position, exact momentum of electron को simultaneously find out करना impossible. Here it states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum. Exact position and exact momentum. Exact position and exact momentum does not determine simultaneously. So simultaneously, every time, every time we does not find the electron exact position and electron exact momentum. So how we can find the position and momentum of electron? तो इन दोनों में से साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते. मतलब एक को फाइंड आउट करने के बाद तो दूसरे को तो फाइंड आउट कर सकते हैं. पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट नहीं कर सकते. इन केस आप मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है तो पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो दोनों को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते. दोनों में से किसी एक को स्टॉप करके दूसरे को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. So here mathematically one equation given by Heisenberg scientist, that is delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. H upon 4 pi. This is the uncertainty principle. Here what is delta x? What is delta p? Delta means change in position, change in momentum, change in position is given by delta x. Change in momentum is given by delta p. Okay. Change in position delta x, change in momentum delta p. So delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. Here h is equals to Planck constant, 4 pi also constant values. ठीक है. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आपको पोजीशन चाहिए तो मोमेंटम को यहाँ पे delta x into delta p is equals to h upon 4 pi. In case you want to find position, then delta x is equals to h upon delta p into 4 pi. In case if you want momentum, then h upon 4 pi into delta x. दोनों में से कोई किसी एक को find out कर सकते. Okay. Now here
uncertainty principle is used to the minimum mass containing particle. मतलब very less mass particle follows this uncertainty principle. In case the mass of the particle will be above an electron, it does not follow the uncertainty principle, and above the mass of electrons, this uncertainty principle does not applicable. Example: the effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic objects and is negligible for that of macroscopic particles. So this Heisenberg uncertainty principle is applicable only for microscopic particles like electron. Microscopic particle, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ही applicable होगा. This principle does not applicable for macroscopic particles. Macroscopic. Macroscopic means large size molecule. उसका molecular mass, sorry, particle mass maximum होता है. तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन जो भी वो भी मोमेंटम में होगा तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा तो ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल. तो macroscopic particles does not follow this equation. Example: here, if uncertainty principle is applied to an object of mass about a milligram 10 raised to minus 6 kgs. तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है 10 raised to mass of an object is 10 raised to minus 6 kgs. तो मास दिया. And next, delta v into delta x is equals to, तो p मोमेंटम को यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग x से इंडिकेट किया है तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग p लिए हैं तो यहाँ पे x. तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू m इंटू v. मास तो कांस्टेंट रहेगा तो v चेंज होगा. तो यहाँ पे डेल्टा इन दोनों में किसको एप्लीकेबल होगा? मास तो ऐसे ही रहेगा डेल्टा v m इंटू डेल्टा v रहेगा. मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी. देन डेल्टा p इज इक्वल्स टू m इंटू v. तो डेल्टा दोनों को एप्लीकेबल नहीं होगा. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. मास तो चेंज नहीं होगा. तो मास चेंज नहीं होगा तो m को डेल्टा एप्लीकेबल नहीं होगा. ओनली v को डेल्टा एप्लीकेबल होगा. तो हियर यू राइट डेल्टा x into delta m into delta v is equals to h upon 4 pi here delta x into delta v is equals to h upon 4 pi m. ये प्लीज clear. Right. Now the mass of an object is 10 raised to 6 kgs. That means milligram. तो milligram को यहाँ पे 10 raised to 6 kgs मिली है. Then here delta v into delta x is equals to this is the principle. यहाँ पे ये मास अपने पास है m is equals to 10 raised to 6 kgs. यहाँ पे लिखो all values are constant. Then delta x into delta v is equals to h value line constant 6.626 into 10 raised to minus 31 upon 4 into pi value 3.14 into mass of an object is 10 raised to minus 6. The total value of this is equals to 10 raised to minus 28
10 raised to minus 28 meter square per second. Meter square per second है। ये जॉल सेकंड और ये केजेस है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड रहेगा। तो here this value is very negligible value. 10 raised to minus 28 मतलब 1 upon 1 के बाद 28 zeros मतलब 0.000 कितना zeros 28 zeros मतलब that value is negligible value. Means here this object, the mass of an object is very heavy. ये macroscopic particle है, but it is not microscopic particle. मिलीग्राम में, तो उससे भी lower mass होगा, वो किसका इलेक्ट्रॉन का। For example, the mass of an electron, mass of an electron is equals to mass of electron आपको already starting में explain किया है 9.11 into 10 raised to minus 31 kgs. 9.11 into 10 raised to minus 31 kgs. This is the mass of electron. ये mass को यहाँ पे put करके अब calculate करो, जो भी आंसर आता है वो considerable value है. This value is not considerable value because 10 raised to minus 28. This one, this particle is macroscopic particle. That's why this is not applicable for this case. And here the microscopic particle like electron will follow this equation, and this equation is applicable like these particles. Here delta x into delta v is equals to 6.626 into 10 raised to minus 31 upon 4 into 3.14 into, here the mass of an object, here electron, the mass of electron is 9.11 into 10 raised to minus 31 kgs. Answer is 10 raised to minus 4. 10 raised to minus 4 meter square upon second. This value is considerable value because here milligram में लेंगे तो 10 raised to minus 28 है, तो ये मिलीग्राम में इससे भी कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटा वैल्यू 10 raised to minus 6 kgs है. 6 part here 9.11 into 10 raised to minus 31 kgs. Electron mass is 9.11 into 10 raised to minus 31. 10 raised to minus 6 milligram, ये ज्यादा वैल्यू है, ये हेवी वैल्यू देन दिस इलेक्ट्रॉन मास. ये मास इलेक्ट्रॉन मास से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है, तो ये मास से कंपेयर करें तो 10 raised to minus 31 बहुत कम वैल्यू है. वेरी लेस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है. दैट्स व्हाई हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू macroscopic particle. It is applicable only microscopic particle like electron. So here this value is considerable value because 10 raised to minus 4 here 10 raised to minus 28. 10 raised to minus 28 value is very lower value. 0.0028 zeros के बाद कुछ नंबर आएगा, तो ये लोअर वैल्यू, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. यहाँ पे 10 raised to minus 4 4 0 से रहेगा 0.001. This value is considerable value. That's why it is, this principle is applicable to like microscopic particle like electron, not macroscopic particle. And here the electron uncertainty is, so uncertainty here, this is the position, this is the velocity of electron. Last equation एक बार observe करो. Uncertainty only 10 raised to minus 8 meters. Uncertainty 10 raised to minus 8 meters. Then uncertainty of delta v in velocity would be, here uncertainty is equals to delta x is equals to 10 raised to minus 8 meters. Clear already? We find out here. Delta x is equals to increase 10 raised to minus 8 meters होगा, तो uncertainty of only 10 raised to minus 8 meters मतलब ये पोजीशन का फाइंड आउट. Here 10 raised to minus 8 into delta v is equals to 10 raised to minus 4. Then delta v is equals to, here delta v is equals to 10 raised to minus 4 upon 10 raised to minus 8, that is equals to 10 raised to 4.
of change in its velocity. The change in velocity delta v is equals to 10 raised to 4 meter per second. 10 raised to 4 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये पोजीशन के वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन उनकी इस पोजीशन मीटर इतना होगा तो उसका वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू ये वैल्यू रहेगी। So finally, Heisenberg uncertainty principle is applicable only microscopic particle like electron. It does not applicable macroscopic particle like milligram containing molecule. मिलीग्राम में होगा तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास होना चाहिए, इससे भी कम मास होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि इससे भी मास और कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे पॉजिटिव और ज्यादा हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल, दिस इज Heisenberg uncertainty principle. And next we will discuss another topic, what is orbital and next quantum numbers. तो ये टॉपिक ओवर है यहाँ से। तो यहाँ तक जितना भी न्यूमेरिकल्स है और न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल इन टेक्स्ट जो भी हो सब प्रैक्टिस करो, इसमें जो भी डाउट होगा तो पर्सनली व्हाट्सएप करो। ये ईयरफोन लगा के सुनो, वॉइस क्लैरिटी है, राइट। ओके, so we will discuss next class. The topic is what is orbital and quantum numbers. Quantum numbers are very very important. So structure pattern completely depend on quantum numbers only. These four quantum numbers complete explain the structure pattern. तो फोर क्वांटम नंबर से ये फोर क्वांटम नंबर्स स्ट्रक्चर पैटर्न को कंप्लीट एक्सप्लेन किया। ये सब इसका थियरी से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी सब फाइंड आउट करने के सब प्रिंसिपल्स है, बट क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीटली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर पैटर्न। तो क्वांटम नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम नंबर आपको समझ में आएगा तो लेसन कंप्लीटली समझ में आएगा। तो यहाँ तक जो भी हो, न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये सब प्रैक्टिस करो, तो न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो। एक्सरसाइज में भी है, एक्सरसाइज यहाँ तक जितना भी न्यूमेरिकल्स है तो सब एक नोटबुक में नोटबुक ले लो, नोटबुक में एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसमें डाउट होगा तो पर्सनल व्हाट्सएप करो, और ये सब टेक्स्ट बुक का भी एग्जाम्पल्स भी चेक कर लो, उसमें भी डाउट होगा तो क्लियर करो। ओके,